जय जगन्नाथ वेलकम ऑल टू लर्निंग लैब पिला माने आज हम डिस्कशन करिया को जाउचे हम 8th क्लास रो चैप्टर लाइट विषय रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर समस्त मन दे की बुझीबा तो व्हाट मेक्स थिंग विजिबल पिला ने हमें जो देखि पारुचे तो हमें किपरि गोटे ऑब्जेक्ट को देखुचे तो किसी जनकर उत्तर आसवा आम आखिरे देखुचे पिला माने आखिरे सिना आम देखुचे किंतु जेते बेले आलोक गोटे वस्तु उपरे पड़ी सारिबा परे सेठो रिफ्लेक्शन हेकी आम आखि पर्यंत पहुँचे तापर ही आम वस्तुटी को देखि परिबा आलोक नथिले आम वस्तुटी को देखि परिबा नाही when light from an object enters our eyes that we see the object the light may have been emitted by the object or may have been reflected by it do you understand the light may have been emitted by the object अर्थ तो से वस्तुटीर निजस्व आलोक थाई पारे किंबा ता उपरे अन्य कहार आलोक पड़ी रिफ्लेक्शन होई हम आखि पर्यंत पहुंचु थाई पारे तो लाइट एमिशन two types of object luminous object and non luminous object an object that emits or produces its own light तो हम डिस्कशन बर्तमान कले पूर्व स्लाइड रे हम जानिले जे जेउ वस्तुर निजस्व आलोक थाए आमे ताकू देखि परिबा किंबा कोनोसी वस्तु उपरे अन्य कहार आलोक पड़ी हम आखि पर्यंत पहुंचले आमे ताकू देखि परिबा the object that emits or produces its own light that is called luminous object example sun but an object that do not produce its own light and is visible due to reflected light example moon has no light of its own it is lighted by the reflection of sunlight okay next देखिबा तो how many types of light रे हम जानिचे तो लाइट गोटे सरल रेखा रे गति करे हम आलोकर गति होची सरल रैखिक लिनियर तले टू टाइप्स ऑफ रे वन इज इंसिडेंट रे एंड अनदर इज रिफ्लेक्टेड रे देखो पिला माने जेउ रेटी मिरर उपरे आसिकी पड़ी थाए ताको हमें कहूचे इंसिडेंट रे एवं मिरर रु जेउ रेटी बाहर के जाई थाए तो ताहा होची रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन हैला परे जो रे जाई थाए दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे आउ जो रेटी मिरर उपरे पड़ी थाए प्रथम रु से होची इंसिडेंट रे आउ पूरा देखो मझिरे जो लाइन टी पड़ीची ताके में नॉर्मल बोली कहिबा ताले इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल एंड द एंगल व्हिच इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल ये देखो the light ray which strikes any surface is called the incident ray and the ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray ये देखो incident ray strike करूची मिरर ऊपर एवं reflected ray reflect करूची मिरर ठाकू नेक्स्ट हम देखिबा angle of incident देखो angle of incident the angle between incident ray and normal is called incident angle of reflection the angle in between normal and reflected ray that is known as reflected angle okay the two laws of reflection first one the angle of incidence is always equal to the angle of reflection ये देखो पिला माने जो इंसिडेंट एंगल रहिला और जो रिफ्लेक्टेड एंगल रहिला always and always it is same the incident angle and reflected angle always same second one is the incident ray the normal and the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane ये देखो पिला माने the mirror is the plane is the same plane in which incident ray normal and reflected ray all the rays are lie in one plane the two laws of reflection भला है बुझिबा the two laws of reflection ये देखो पिला माने lateral inversion जेते बेले आमे गोटे दर्पण आगे ठिया होई कि हम डाहाण हातटा उठेइबा
तो आम दर्पण भितर देखा पाइबा जे तार बाँ हाथटा उठी। अरे से मनुष्यटा आम एका किंतु ये कौन हुए ना पार्श्व परिवर्तन हुए। ये देख पीटा किपरि बाहर गोटे प्रकार देखा पार्श्व परिवर्तन हो किपरि देखा पीटी दर्पण भितर। An image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. समतल दर्पण रे एपरी होई थाए। ये देखो रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ताले रेगुलर कोन और डिफ्यूज्ड कोन? पिला माने जेतले हम स्मूथ सरफेस ऊपर करूचे रिफ्लेक्शन करूचे दैट इज नोन एज रेगुलर और स्पिक्युलर रिफ्लेक्शन। आ जेते बेले आबडा खबडा जगह रे हम रिफ्लेक्शन करिवा दैट इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बुझेला? ओके। नेक्स्ट टाइम देखिबा रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रो पिला माने डेफिनेशन रहिला। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पिक्युलर रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट डायग्राम इज द स्पिक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface, they are not parallel. The reflection is known as diffused or irregular reflection. Diffused or irregular reflection. ये देखो माने मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पिला समस्त सेलून को जाइथिबो देखिथिबो सेठारे किपरि तीनटा आगो को देखि दर्पण को देखिला माने पाखा 3-4टा प्रतिबिंब हमको हमर देखा जिवो। तो सेटा कोन हुए ना दीटा दर्पण जेतेबेले परस्पर सम्मुखीन होइक रहि जानती, टू मिरर्स इनक्लाइंड टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस दैट इज नोन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये देखा पिला कोड यूज होउची पेरिस्कोप। पेरिस्कोप रे आपको यूज करा होची मेथड टिको पेरिस्कोप रे यूज करा होची। तो पेरिस्कोप पुनी कोठी यूज करा होची ना पिला माने सबमराइन रे यूज करा होची, टैंक रे यूज करा होची। तो जानि थियो सबमराइन टा समुद्र भितर जाई थाए ताले समुद्र बाहर कथा किपरि देखिबा। तो ये देखो सिंबल तबे देखि पारुथबो, तुम डायग्राम टी देखि पारुथबो। समुद्र भितर थिबा लोकटी किपरि ऊपर थिबा जहाजटी को देखि पारे दुईटी दर्पण द्वारा को कराई थाए दैट इज नोन एज पेरिस्कोप। देन हम देखिबा कैलिडोस्कोप। पिला समस्त पिला दिने सब करिथिबो कागज रे तयारी करथिबो ता भितर कागज गुंडा पकेले अनेक प्रकार चित्र तुम देखि पारुथबो दैट इज नोन एज कैलिडोस्कोप। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन ए कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन द्वारा आमे कैलिडोस्कोप भितर अनेक गुडी चित्र विचित्र सब देखि पारुथिले। कैलिडोस्कोप केमि तयारी करिबा देखो मेकिंग ए कैलिडोस्कोप केमिति कैलिडोस्कोप टी आमे तयारी करिबा। तो टू मेक ए कैलिडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स each about 15 cm long and 4 cm wide. Join them together to form a prism as shown in figure A. फिगर ए देखि पारथो पिला माने किपरि तीनटा प्रिज्म को जोड़ी दिया जाइछे। तो फिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब or tube of a thick chart paper. Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strip. Okay. Then close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center. देखि पारथो एठी देखो कि होल डे रहिछि। ए होल द्वारा ही हमें देखि परिया विभिन्न प्रकार शेप आउ चित्र विचित्र जहाँ भी डिजाइन सब देखि परिया। To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under disc. Okay. आपको ड्यूरेबल करिया पई गोटे प्लास्टिक रो शीट या पर लगे दबा। At the other end, touching the mirror, fix a circular plain glass plate. Place on this glass plate several small pieces of colored glasses. ता भितरे हमें किछि भंगा काच सबु विभिन्न रंग आकृतिर काच सबु ता भितरे रखि दबा। ए जो देखो छ आगो पटे जो रहिछि ना ता भितरे हम भंगा काच सबु रखि दबा। Then close this end of the tube by a ground glass plate. ताकू तापर ग्लास प्लेट रे कवर कर दबा। Allow enough space for the colored pieces to move around the cardboard. ताले when we peep through the hole we able to see variety of patterns, but we never see the same pattern again and again. The designers are use kaleidoscope to get idea of different types of designs.
तो डिजाइनर माने जो माने देखुथिबो हमर विभिन्न प्रकार लुगा शार्ट डिजाइन करूचंती किंबा विभिन्न चित्र विचित्र से करूचंती विभिन्न डिजाइन्स तैयारी करूचंती तो से माने कैलेडोस्कोप व्यवहार करके विभिन्न आइडिया पाई पारुचंती तमे चित्र देखि परथुबो किपरि कैलेडोस्कोप भीतर विभिन्न विभिन्न प्रकार रो पूरा बढ़िया बढ़िया सब डिजाइन सब आसी थाए आको ताकू से माने डिजाइनर माने व्यवहार करि थांती नेक्स्ट हमें देखिया पिला माने डिस्पर्शन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन we know that sunlight is not only one color, it is a mixture of 7 colors which is known as इंद्रधनु जानना पिला माने विबग्योर VIBGYOR violet indigo blue green yellow orange and red the splitting of light into its color is known as dispersion of light गोटे ग्लास प्रिज्म उपरे आमे गोटे व्हाइट लाइट बा सनलाइट को पकेइबा ताले ताहा मध्यरु ए सातोटी जाक रंग पूरा डिविजन हेकी बाहर को बाहर आसीबो तो रेनबो इज ए नेचुरल फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन ओके बुझियला पिला माने नेक्स्ट हमें वर्तमान हमर बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर हमें देखिया वर्तमान आई इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बाय व्हिच वी आर एबल टू सी it is a most important sense organ so what is the shape of the eye the eye is spherical in shape okay the eye has a roughly spherical shape the outer coat of the eye is white it is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents तो हमर बाह्य आखिटा ही कोन करि थाए हमर जो भीतर रही विभिन्न प्रकार मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन सब रही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन सब रही आखि भितर से सब को कौन करें सुरक्षित रखी थाए आखिर बाह्यतम अंगटा ओके ठीक अच्छे इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया ओके इट्स ट्रांसपेरेंट ओके सॉरी फॉर दैट ओके नेक्स्ट देखिए इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया चित्र देखि पारुथबो transparent front part is called cornea behind the cornea we find a dark muscular structure which is called iris तो देखि पर तो ए जो छोट छोट कला रंगटा रहिनी टिके कॉर्निया पछपट को गार पड़े जे ता पछपट को जो कला रंगटी रहिची दैट इज कॉल्ड iris रे पिला माने iris in the iris there is a small opening called the pupil गोटे छोट रंध्र रही थाए जाको में pupil कहिबा and the size of the pupil is controlled by the iris आउ से जो iris रहिला ता कोन करथाय ए pupil रो साइज को कंट्रोल करि थाए the iris is the part of eye which give it its distinctive color हमर आखिर जो डोला रंग कोला हेची तो अर्थ हमर रंग iris रो रंग होची कोन रिप्ले कोला when we say that a person has green eyes we refer actually to the color of the iris okay बुझियला जदि गोटे लोकर रंग आखिर रंग होची सबुज रंगर ता अर्थ तार इरिस रंग होची सबुज ताले द इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई केते मात्रा रे आलोक हम आखि पर्यंत पहुंचबो ता निर्धारण करथाय किए इरिस निर्धारण करिथाय जा फले से संकोचन और प्रसारण हेई कि प्यूपिल रो साइज को छोट बड़ करिथाय एवं आलोक को भीतर को पठै थाय ताले बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज ए लेंस which is thicker in the center ता पछर रहिछि आई लेंस which is a most important organ of our body eye lens the lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina ताले लेंस कोन करे ऑब्जेक्ट को धरे बा इमेज ता को धरे एवं रेटिना रे पकाई थाए एवं रेटिना रे हम जानि थाओ पिला माने ऑब्जेक्ट ता ओलोटित माने ओलोटा होई कि पड़ी थाए एवं जितले ऑप्टिक नर्व रो सेंस हमर पूरा ब्रेन को जाई थाए सेते बेले हमकु ऑब्जेक्ट ता सीधा भाबरे देखाई थाए किंतु रेटिना रे ऑब्जेक्ट ता ओलोटा भाबरे हमकु पड़ी थाए किंतु जणा पड़े नाही ओके ठीक अछि तो रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स ताले रेटिना रे ही कौन होता है ना सेवरल नर्व सेल्स लागी कि रहिता है एवं यह कनेक्शन थाए कोठी ब्रेन सहित कनेक्शन होता है सेंसेशन फेल्ड बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड हम जानि छे देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल कोन्स एंड रॉड्स कोन्स कोन करे ना व्हिच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट रॉड्स व्हिच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट
डिम लाइट हेतिले रड सेंसिटिव हुए आउ ब्राइट लाइट हेतिले कोन सेंसिटिव हुए एंड कोन सेंस ऑल द कलर्स ओके पिला माने बहुत ही इंपोर्टेंट ब्लाइंड स्पॉट कौन ही थाए रेटिना मध्य रे एमती गोटे अंश थाए एमती किछ अंश थाए जहा पाखरे की ऑप्टिक नर्व रो कनेक्शन न थाए एंड दैट पॉइंट इज नोन एज blind spot so no vision is possible at that spot in blind spot no vision is possible okay next time देखिबा the most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 cm 25 cm रो आमे पाखो को आनी पढिबा द्वारा आखि ऊपर प्रभाव पड़ी थाए एवं दूर रखी पढिबा द्वारा मध्य आखि ऊपर प्रभाव पड़ी थाए तेनु पिला माने तमे जेहेतु हमर पाठ पढ़ा पिला तेणु 25 सेंटीमीटर को टिके बजाय रखिबो जहा पड़ले कि तुम मानकर आखि सतेज रहइबो सुरक्षित रहइबो तो नेक्स्ट पिला माने देखिबा व्हाट डू यू मीन बाय इमेज एंड वीडियो तो हमें जो ऑब्जेक्ट को देखुची दैट इज एन इमेज तो एटा केते बेले गोटे वीडियो रे कन्वर्ट होई थाए अच्छा देखो पिला माने द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना आमे गोटे जिनिस ऑब्जेक्ट देखु देखु तार प्रभाव नष्ट हो जायनी इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16th ऑफ ए सेकंड 1/16th ऑफ ए सेकंड पर्यंत तार प्रभाव हम रेटिना रे रही थाए तेनु ता भितरे आमे आउ गोटे ऑब्जेक्ट पुणी आउ गोटे ऑब्जेक्ट आउ गोटे इमेज आउ गोटे इमेज आउ गोटे इमेज बहुत बहुत शीघ्र देखाई देबा तो सेटा इमेज न होई कि हे जाई वीडियो if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second गोटे सेकेंड रे जदि 16 टे अधिक इमेज को हम आखि पर्यंत पहुंचै दिया जाए ताले आमे त कहया कोन मूविंग ऑब्जेक्ट बोली कहिबा द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली a number of separate pictures in proper sequences the video is also a separate pictures in proper sequences number of separate pictures in proper sequences okay they are made to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second पाखा पाखी गोटे सेकेंड रे 24 टी पिक्चर को हम आखि पर्यंत पहुंचै दिया जाय जहा को हमें वीडियो बोली कहिबा तो नेक्स्ट टाइम देखिबा आईलिड व्हाट डू यू मीन बाय आईलिड तो आईलिड कोन करथाय ना आखि को सुरक्षा देई थाय The nature has provided eyes with eyelids to prevent any object from entering the eye. आखि रे गोटे ऑब्जेक्ट हठात यदि पशिया को माने आसी थाए तो आईलिड कोन करि थाए ना आखि को ऑटोमेटिकली बंद कर दे थाए ताले आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड दरकार न थाए आवश्यकता रे अधिक आलोक आखि पर्यंत पहुंचिया को चेष्टा करि थाए ताले आईलिड कोन थाए शट डाउन हो जाय थाए जा पड़ले आलोक पहुंची पारे नै जा पड़ले आखि को हमरे सुरक्षित रखि थाए नेक्स्ट हम देखिबा किछि आई डिजीजेस जदि हमें आखिर प्रॉपर जत्न नवा ताहले निश्चित रूपे डिजीजेस होबो तो मायोपिया हाइपेरोपिया एंड कैटरैक्ट दीज आर द थ्री डिजीजेस ऑफ आवर आई तो मायोपिया कोन नियर साइटेडनेस तो हमर समीप दृष्टि दोष यार कोन पिला माने ना समीप पाख वस्तु देखा जिवो किंतु दूर वस्तु देखा जिवो नाही इंडिविजुअल सी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली while objects at a distance are faded and blurred दूर वस्तु कौन हबो ना फेडेड आउ ब्लर्ड देखा जिवो किंतु हाइपेरोपिया रे यार दूर दूर दृष्टि दोष यार माने मायोपिया रे विपरीत ता माने दूर वस्तु देखा जिवो किंतु समीप वस्तु पाख वस्तु देखा जिवो नाही ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस लुक क्लियर बट क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड और फेडेड किंतु पाख वस्तु को हबो फेड हे जिवो तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट पिला माने एटा जेतले वयस्क होई जांती व्यक्ति माने कोन होय ना तांकर आखिर परदा ऊपर गोटे परदा मारी जाय आखि ऊपर जा फल रे क्लाउडिंग देखा जाय ऑब्जेक्ट सब तांको फ्लफी देखा जाय माने क्लाउडिंग देखा जाय क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई ऊपर गोटे क्लाउड मारला भला रही जाय जा फल रे ऑब्जेक्ट को से माने भलो भाव रे देखि पारंते नै हला आई साइड बिकम्स फ्लफी ओके eye lens becomes cloudy okay next so it is operated by the doctors and install a artificial eye lens by which cataract also clear okay so how we care of our eyes so first of all we know that if there is any problem we should go to an eye specialist if advised use suitable spectacles okay insufficient light causes eye strain and headaches
insufficient light causes eye strain and headaches. Too much light like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. So do not look at the sun or a powerful light directly. माने पिला माने आमे अति माने अत्यधिक आलोक आसुथुवा वस्तु केबे चाहिमानी जहा के हम आखि को खराब कर दे पारे पिला माने डायरेक्टली सन को मध्य चाहिबा सूर्य को चाहिबा ताले भी अधिक अमाउंट रे लाइट हम आखि रे पहुंचबो जा फल आखि खराब होबार संभावना मध्य रहिछि. Never rub your eyes. If particles of dust go into our eyes, wash our eye with a clean water. Do not rub it. If there is no improvement, go to a doctor. जदि कोनोसी डस्ट हम आखिरे पहुंची जाए आउ या द्वारा शीघ्र माने क्योर हमको मिले नहीं तारे डॉक्टर को कंसल्ट करिया दरकार. Always read at the normal distance for vision. Only we know that 25 centimeter is the normal distance. Okay, do not read by bringing the book too close to our eyes or keeping it too far to our eyes. Okay, next time देखिबा acting of vitamin A for our eye. Well, if food is deficient in some components like vitamin A, eye may also suffer. Okay, eye may also suffer. Lack of vitamin A in food is responsible for many eye troubles, which is known as night blindness. So every day we take raw carrots, green vegetables such as spinach, cod liver oil, and eggs, milks, curd, cheese, butter, and fruits such as papaya and mango, which are also rich in vitamin A. And vitamin A protects our eye from the diseases. Next देखिबा Louis Braille is a visually challenged person, developed a system for visually challenged persons and published it in 1821, which is known as Braille system. पिलाମାନେ तुम देखि पारुथबो किपरि डॉट रहिछि 63 डॉट पैटर्न रहिछि. पिलाମାନେ देखो मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेली. तो पिलाମାନେ हमर ब्लाइंड लोक माने को व्यवहार करिया पई से पढिबा पई तो ब्रेली होची very resourceful. Okay, the present system was adopted in 1932. Okay, methods depend upon recognition by touching. पिला माने ब्लाइंड लोक माने टच करी कि आको जानि पारंती कोई अक्षर लिखाई छि कोन लिखाई छि. तो देखि पारुथबो CAT तो सी पई जोड़े डॉट रहिछि, ए पई गोटे डॉट, टी पई किपरि हाबरे पैटर्न करके से डॉट गुड को रखाई छि. तो से माने डॉट विषय रे ऑलरेडी रिकॉग्निशन पाई जानती जेमिति हमें एबीसीडी पढुचे से माने मध्ये ए सब पढिबा द्वारा ए सब डॉट विषय रे पैटर्न विषय जानिबा द्वारा से माने ही गोटे आइडेंटिफाई करि पारंती जे एठी कोन लिखाई छि. दिस पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेली शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स to recognize words by touching. से टच करी कि जानि पारंती जे एठी कैट लिखाई छि. ताले ब्रेली टेक्स्ट can be produced by hand or by machine. Now typewriter also invented. Braille system has 63 dot patterns or characters. Each character represents a letter, a combination of letter or a common word or a grammatical sign. पिरान हम देखि पारुथबो किपरि एठी कमारा मध्य गोटे डॉट पैटर्न रहिछि, and रो बिकिन डॉट पैटर्न रहिछि. इट इज ए सीरीज ऑफ लेटर्स ऑन CAT ए समस्तंकर गोटे गोटे डॉट पैटर्न रहिछि. ओके पिला माने थैंक यू, इट्स ऑल. पिला माने सब्सक्राइब करिबा एवं यार क्वेश्चन आंसर हमें परवर्ती वीडियो रे रखिबा. ओके देन थैंक यू.